Hello students and welcome to Educational Journey. We are live again and today we are going to discuss the University of Science and Technology or UST Korea Scholarship Program for the graduate degree. It means that these scholarships are offered for the master's and the PhD degree programs. So we will start our session and I will provide you the complete guidelines for the admissions in University of Science and Technology Korea and the scholarship details, and then I will discuss the further details and the procedure for the application or the admission procedure. So after this or at the end of this session, you can ask your questions and I will answer your questions. First of all, I am just waiting for few students to join me. As you will join me, I will start the further details of this scholarship program. This is the highly paid or highest paid scholarship in South Korea. So other universities or other scholarships are paying less than this scholarship, or the amount of monthly stipend is more than any other scholarship in South Korea. So I will provide you the further details in just a moment. I'm just waiting for a few students that they can join me and then I can start. जी इरम अब्बास वेलकम टू दिस सेशन. आपको खुश आमदीद कहते हैं इस सेशन में, जो कि हमने कल बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोरिया के ग्रेजुएट डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में होगा. और इस सेशन के अंदर मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा इसके स्कॉलरशिप के लिए, और देन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा द प्रोसीजर और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हाउ यू कैन प्रोसेस और हाउ यू कैन apply for the admissions and what are the important points for this university, or how you can increase your chances for the admission and the scholarship. So I'm just waiting before moving forward. I'm just waiting for a few more students to join me, or within 1 minute I will start the uh, guidelines, or we will discuss the guidelines for this University of Science and Technology Korea Graduate Degree Scholarship Program. So अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इससे पहले ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के बारे में, इरम अब्बास or anyone else is watching me, then you can ask me right now. After that, I will start uh, guidelines for the University of Science and Technology Korea Graduate Degree Scholarship Program. ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है और इसके 32 कैंपसेस हैं ऑल ओवर द कोरिया. ठीक है, अभी मैं जनरल इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं. 32 कैंपसेस ऑल ओवर द कोरिया एंड a government funded university. Yesterday I asked you about the documents. What documents, Iram Abbas? Sorry, I forgot about the documents about the Global Korea Scholarship and what is the confusion, और आपको confusion क्या है या आपका पूरा question क्या है, काइंडली वो लिखेंगे तो फिर कंप्लीट मतलब आंसर कर दूंगा. सही है, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ उसके बारे में. आप क्वेश्चन जब भी लिखें ताकि पूरा क्वेश्चन लिखें, तो उससे इजी होता है कि समझना कि आप how will I check the first form that is checklist? Check, or you mean a label or name? How I will check the okay, how I will check. I am going to the guidelines for this Global Korea Scholarship.
जस्ट अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन। मैं अभी बताता हूँ आपको, जस्ट मैं फाइल ओपन कर लूँ। उस फाइल के अंदर जाके फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक मैं जो समझाऊंगा आपका क्वेश्चन, हाउ आई विल चेक, मतलब आप कह रही हैं, पूछ रहे हैं कि आप कैसे इसमें टिक मार्क्स वगैरह करेंगी, राइट। यहाँ पे सबमिशन स्टेटस, ठीक है, ये आप यहाँ पे पूछ रही हैं, राइट। तो ये आपने लीव कर देना है, ठीक है, ये आपने लीव कर देना है। ये यहाँ से, ये फर्स्ट पार्ट जो है आपने यहाँ से राइट करना है, ठीक है। यू विल राइट हेयर, नॉट द अबव दिस लाइन। So it is for office, embassy or university office. Then you will write your name of your surname. Like if your full name is Iram Abbas, then Abbas is your surname and Iram is your given name. कंट्री अपना कंट्री लिखेंगी, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री है। देन आप यहाँ से डिजायर्ड डिग्री, जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करिए, मास्टर्स के लिए करें तो मास्टर पे क्लिक करें, चेक कर दें, और इस पे करना है तो आप चेक कर दें। ये वाला जो ये वाला साइन है यहाँ पे अगर इसके अंदर लगा दें, या अगर वर्ड फॉर्म में मैं आपको ओपन करके जस्ट अ मोमेंट दिखा दूं, उसके अंदर सम टाइम सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है ऑटोमेटिक के इसने ये सिलेक्ट किया है, या सिलेक्शन उसके लिए आसान हो जाती है बहुत, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर अभी ये ओपन हो जाए वर्ड फॉर्म, तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड फॉर्म के अंदर आप कैसे आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वर्ड फॉर्म की जो फाइल आ गई मेरे पास, और इसको मैंने किया ओपन। 1 मिनट बस, ये ओपन हो जाए एक दफ़ा फाइल, क्या थोड़ा सा टाइम लेती है वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल, कंप्यूटर काफ़ी देर से चल रहा होता है, तो समटाइम सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको मेरे पास, नो आई एम सेइंग आई एम नॉट सेंडिंग ओरिजिनल टू माय ओरिजिनल्स के आगे क्या करेंगी, यस ओरिजिनल के आगे आप यस करेंगी, बट नोटराइज्ड कॉपीज होंगी। आपको मैं तकरीबन 3 से 4 बार मतलब सबको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स को। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने जो है ओरिजिनल नहीं भेजना कभी भी फॉर्म किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। जब मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज या जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ओरिजिनल कभी भी नहीं भेजने होते, ठीक है। आपने हमेशा जो है वो भेजना होता है नोटराइज्ड कॉपी, नोटराइज्ड कॉपी ही आपको हमेशा भेजनी होती है। तो आप उन जब नोटराइज्ड कॉपी भेजेंगी तो यहाँ पे आप कर देंगे यस, ठीक है। यहाँ पे जब आप यस कर देंगी तो आराम से ये समझेंगे आपका हो जाएगा ओरिजिनल कंसिडर, और इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड लेटर है, तो मैं डिग्री वाली स्टेटमेंट के आगे यस या नो क्या आप यहाँ पे यस मार्क करें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे ना, यहाँ पे करके हैंड राइटिंग से बेहतर है आप यहाँ पे टाइप कर दें इन ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ से जाएं, कलर सेलेक्ट करें, ब्लू में जाए, ये वाला ब्लू कलर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा शाइन वाला, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखें कि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और इनमें से एक को डिलीट कर दें, या बैचलर्स, डिप्लोमा, ये वाली पार्ट डिलीट कर दें, और यहाँ पे आगे लिख दें एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस कर दें, ठीक है। और बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पे आगे लिखेंगे कि 7th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट, और यहाँ पे आप यस कर देंगी। डेफिनेटली आप एक सर्टिफिकेट तो इसकी जगह पे भेज रही है ना, उन्होंने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं आप उसको फुलफिल कर रही हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बस करना यही है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा मेंशन कर दें कि आप कौन सा फॉर्म भेज रही है, तो आप यहाँ पे फॉर्म कर देंगी मेंशन, तो इट्स ओके, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। Students, we are live again, and for your information, today we will start University of Science and Technology scholarship for the graduate degree programs or graduate degree scholarship program for the fall 2021 admissions, and I will provide you the complete guidelines. We will discuss the given instruction by the university office, and the official guidelines for the fall semester will uh, be online from March 3rd.
but I am giving you these guidelines on the basis of previous year's instructions and previous semester's instructions and all the details provided by the university and some of the experiences from different scholars at University of Science and Technology. तो आपको मैं ये कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगा स्कॉलरशिप के लिए। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कब ये स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन और आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो कैसे अप्लाई करें, अगर डिग्री कर रहे हैं अभी एक्सपेक्टेड डिग्री है तो क्या करेंगे। ठीक है, इवन इफ यू कैन नॉट अप्लाई दिस सेमेस्टर देन यू कैन अप्लाई नेक्स्ट सेमेस्टर इन सितंबर। तो आपके पास दो चांसेस होते हैं साल के अंदर, दो बार मतलब दो हर सेमेस्टर के लिए एडमिशन करते हैं। अभी फॉल के लिए, फॉल कोरिया के अंदर जब भी फॉल सेमेस्टर का नाम आता है तो इट मीन के फॉल सेमेस्टर सितंबर से जो क्लासेस शुरू होती हैं 1 सितंबर। एंड द स्प्रिंग सेमेस्टर मीन जिसे हम बहार, स्प्रिंग बहार वाला जो होता है सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मार्च इन साउथ कोरिया। तो जनरली ये दो टर्म्स यूज होती हैं, फॉल टू 2021 एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग के एडमिशन हो चुके हैं लास्ट ईयर, सो स्प्रिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनकी पहले 10 से 15 दिन पहले उन्होंने पहुंचना था। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन कंप्लीट कर लिया है कल से, या मतलब 2 मार्च से वो जो है अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले 1-2 दिन उनकी ओरिएंटेशन होती है और फर्दर प्रोसेस। तो अब जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं मार्च 3 से, वो हो रहे हैं हमारे पास जी फॉल 2021 के एडमिशन। ठीक है, तो मैं अभी ये बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। ओके, मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगी। सो कैन आई प्रिपेयर द रिकमेंडेशन लेटर्स एंड टॉप 20% स्टूडेंट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय प्रिंसिपल नाउ एंड देन यूज दी दोज फॉर नेक्स्ट ईयर। देखें श्रुति दास, अब अगर आप ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रही हैं ना, तो हमेशा डॉक्यूमेंट विद इन 2 और 3 मंथ्स ओल्ड सही है। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा पुराने होते हैं ना डॉक्यूमेंट, या इफ you are applying next year and you want to get this the document right now, then it will be very old. Most of the universities or authorities accept the documents just 3 months old or less than this. This is generally a rule, or sometimes they mention it, sometimes they do not mention it. So it is always better to get this form or recommendation letters or other letters just at the right time. Like if the scholarship is going to be announced in February, then you can get this letter in like January or December. So from February you can apply. So मेरी सजेशन यही है कि आप अगर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगी तो 2 से 3 महीने पहले आप वो रिकमेंडेशन लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करें, बिकॉज इतना टाइम रिकमेंडेशन लेटर पे नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सेंड request for the recommendation letter, then your professor can write it within 2 to 3 days or maximum 1 week. So it is enough for a recommendation letter. Even they can ask you that write a letter and send it to me in the Word format, and then he can or he can edit and print out and sign and stamp. So बेटर यही है कि आपको उसी टाइम या उन्हीं दिनों में जब आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो उस वक्त आप अप्लाई करें या रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह लें। इरम अब्बास, थैंक यू सो मच। So now I am going to start the instructions for the University of Science and Technology degree programs. बहुत सारे स्टूडेंट्स और ने भी कहा था हम ज्वाइन करेंगे, बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ बिकॉज वी आर ऑलरेडी गोइंग late and it is already almost 15 minutes now for in the session. तो आप लिखेंगे गूगल के अंदर यूएसटी कोरिया, ठीक है, रैंकिंग वगैरह ये चीज़ें बाद की बात है, पहले आप लिखेंगे यूएसटी कोरिया। तो ये जो ust.ac.kr की वेबसाइट है ये ओपन होगी, ठीक है, आपने इस पे जाना है। अभी जस्ट लाइक थोड़ा सा चीज़ें जो बैकग्राउंड है जो बाकी चीज़ें वो आपको मैं बताता चलो।
ठीक हो गया, देन दिस पेज विल ओपन। ठीक है, अगर ये कोरियन में ओपन होता है तो यहाँ पे ऊपर इंग्लिश की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, आप क्लिक कर दें here, right at the top right corner or somewhere, so you can open it in English. तो ये जी जर्नल वेबसाइट है। अभी देखें, a university where 32 national research institute come together on one campus, mean कि it is a centralized system and there are 32 national research institute. National research institute mean government funded research institutes. So this is the just simple layout for the university website, and you can see campus, school, majors, curriculum, and other details of the this. I did my bachelor's from Gazi University. When I go to them for recommendation, they behave like I'm asking for something illegal. Even I write the recommendation letter myself. They just have to sign. Still, they give so much hard time. Yes, this is a problem in Pakistan because at the time when I was applying, there were some professors, even one of the professors asked me, if you will try to enter to my office next time, so I will kick you out or something like this. So that time I felt really bad, but at the end I got from any other professor, and somehow I managed to submit the recommendation letter. तो अब आपको इसी तरह से कुछ मैनेज करना होगा। अगर आप देखें कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो रहा रिकमेंडेशन लेटर, तो देन यू कैन आस्क एनी अदर प्रोफेसर फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ठीक है, या आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चले जाएं, या अगर आप डायरेक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा रही हैं तो उसके पास ना जाए, किसी लेक्चरर या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी वहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो समहाउ आई थिंक, उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा टीचर मिल जाएगा। अच्छे टीचर की निशानी ये होती है, माई पर्सनली मतलब मेरी जो पर्सनल राय है कि he will always support you and he is always available for you if it is uh, like मैटर ऑफ योर फ्यूचर और समथिंग। अगर आपके मुस्तकबिल का मसला है, कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, देन ही विल राइट यू अ वेरी गुड लेटर। जो अच्छा टीचर हो जाए, अच्छा प्रोफेसर या अच्छा लेक्चरर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग डिफरेंट होती है, स्कूल लेवल पे डिफरेंट होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको स्टूडेंट और टीचर के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। आप जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो रियल टीचर्स होते हैं। ठीक है, बाकी टीचर्स तो देर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग जस्ट एज अ टीचर, बट दे आर नॉट टीचर इन द रियल सेंस। तो अब हो सकता है किसी को बुरी भी लग सकती है ये बात, लेकिन जो टीचर आपका होगा आ, वो हमेशा आपको स्टूडेंट के लिए भलाई सोचेगा और स्टूडेंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चले गए, उसके बाद हमने जाना है एडमिशन्स में। तो एडमिशन नोटिस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें या डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक कीजिए तो एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये नई वेबसाइट ओपन होगी और इसके अंदर हम देखेंगे कि जी क्या डिटेल्स गिवन है। वी आर डिस्कसिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्रीज। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन की एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपके पास एप्लीकेशन और इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये लेआउट है इसका। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कुछ अनाउंसमेंट आ रही है फॉल सेमेस्टर 2021 के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। नॉट एक्सेप्टेड इंग्लिश टेस्ट स्कोर सबमिशन डिफरमेंट। ये पहले करते थे कि आप पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और 10-15 दिन 20 दिन के बाद तक आप आइल्स वगैरह जमा करा सकते थे, लेकिन इस दफ़ा से ये कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म जमा कराएंगे साथ ही आपको आइल्स का स्कोर सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि नॉट एक्सेप्टेड टॉइक टेस्ट स्कोर फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स, रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ टॉफल। तो टॉइक इस सेमेस्टर से इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो टॉफल है उसके भी लेवल उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है जो रिक्वायरमेंट है। और आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे आपके पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्म है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ओपन करके डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स। इंटरनेशनल एडमिशन स्केड्यूल है, एप्लीकेंट और एप्लीकेशन गाइड फॉर
something the final results and registration for previous semester. So when then we are just going to the international admission schedule for the coming semester, which is a fall 2021. So if you are a newcomer here or you are just joining us, then this is a University of Science and Technology Korea, or this is a live session for University of Science and Technology Korea for the graduate degree scholarship programs. We are live here to discuss University of Science and Technology graduate degree scholarship program, and I'm going to give you the complete guide for this scholarship. So this is the announcement which was updated on 28th of the Jan 2021, and already 2,875 students, foreign students, checked this website. So you can see how many people are interested or people are looking for the guidelines or they are waiting for the admission process. So it is always better to start preparing your documents in advance. Even Iramabas, you are a final semester student, then you can save the instructions for even next year. If you are not selected this year, then you can apply with the better documents, with the better statement of purpose and personal statement in the next semester or next year as well. So it depends on you. So they said that the for international admission schedule for fall semester 2021 has been fixed as follow. So this is the schedule. Announcement of application guidelines will be on March 3rd, 2021. So coming Wednesday, they will announce the complete guidelines or updated application guidelines. Apply for admission. The admission procedure will start on March 18th and it will end on April 8th. So you can submit your application from March 18th to April 8th. This is the Korean time, 5 p.m. on 8th April 2021. And announcement of the first screening results will be issued on the or announced on May 13th, and then second screening in-depth interview. After first screening, they will conduct an interview for all the shortlisted students, and the result of this second screening or the second screening will be done on 18th of the May, and then they will announce the final results uh, June 10th, Thursday. Yes, Miss Biology, I'm discussing these all the things, and I'm going to provide you all these details. So uh, stay connected. I will explain everything. So I'm going step by step or one by one. I will discuss these things. Yes, for sure. I will let you know how you can apply. Even you can open this website, and you can, if you do not want to stay connected or you do not want to just listen me, then you can also go to this website, which is admission.ust.ac.kr, and you can see these all the details about this. So there is application fees as well, which is just very less as compared to the other international universities. All applicants for fall semester 2021 will require to pay the application fee, and it must be submitted each time you apply for the admission. So even if you apply next semester again, then also you will submit this fees. Your application cannot be submitted until the application fee has been processed. So first, after filling your forms and other things, you should pay your application fees, which is USD 30 $30. So this is maybe 4,500 in Pakistan or 5,000 something. So you will submit this USD dollar 30 for the application fees. How to pay? You can pay by credit card service online, or you can use any other mean. Please check whether your credit card can be used on online service in advance. And for the English proficiency, the most important thing in the for the UST scholarships and the admissions, सबसे अहम जो चीज़ यूएसटी के एडमिशन्स या यूएसटी स्कॉलरशिप के लिए है वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो स्कोर आपको मैंडेटरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। ठीक है, इस साल जो टॉइक है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे विल एक्सेप्ट ओनली टॉफल और आइल्ट्स एंड English test score submission deferment policy removes from fall semester 2021.
Okay, so these are the general details and the schedule of the application and the like admission schedule. Now I'm going back to the ust.ac.kr website. Sorry, not this one, but I'm going back here on the admission portal or the admission website. Admission वाली जो website है इसी के मैं पीछे जाऊंगा बैक प्रेस करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट हैंडबुक। अब ये 3 मार्च से यहाँ पे एक नई हैंडबुक आ जाएगी। ये जो है तकरीबन 99% और you can say 95% will be same, just admission schedule they will change and some other details maybe, but otherwise this will remain same, ये सेम ही होगी। सिर्फ जो स्केड्यूल वगैरह होता है वो हर सेमेस्टर में चेंज होता है क्योंकि डेट्स डिफरेंट होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने यहाँ से क्लिक करना और ये डाउनलोड आपने कर लेनी है, ठीक है। अब जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, सही है। तो उसके साथ ये आ गए। अब आप इस पे क्लिक कीजिए और ये आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ फाइल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मजीद स्टेप्स बताए गए हैं, एडमिशन इंटरनेशनल एडमिशन स्केड्यूल बताया गया। वो ये है कि अनाउंसमेंट होगी गाइडलाइंस की, फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर ये सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग जो कि फर्स्ट पार्ट है स्क्रीनिंग का। देन इन डेप्थ इंटरव्यू होगा जो सेकंड पार्ट है स्क्रीनिंग का, एंड अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जून 10th के राउंड अबाउट, और मे बी इफ दे delay it will be announced before 20th June or something. Then they will send you the admission forms and other visa process for the visa, other documents for the visa process, and other documents related which you need for the visa and the embassy, and then admission registration and so many things which are online before coming to Korea. So download this guideline. Okay, it is in PDF, and you, if you want to read it here, maybe your browser supports it, then you can read it here. But I already got this PDF file and I'm going to this PDF file. This is the international admission guideline for the fall 2020, for the 2021 spring semester, previous semester, but this will be almost 95-98% same for this coming semester, which is fall 2021 semester. So we are going to like read and explain these guidelines to you. You can better understand, and then you can write your questions, or your you can ask me about your confusions. तो ये जी अबाउट यूएसटी आपको बताएंगे, देन दे विल गिव यू सम एडमिशन टाइप एंड टाइमलाइंस डिटेल्स, एंड देन एप्लीकेशन मेथड, and then eligibility criteria, online application process. Because the admission process is online, you need to fill the applications forms and upload other documents in the online portal. List of required documents, official English test scores, and application evaluation information by stage, admission registration, and other forms are provided at the end. Um, Wait a moment. Now we have a question related to the previous topic. Yes, sir, I have a question. Yes, regarding the yesterday topic, they will not accept Aadhaar card or any other thing as citizenship. If this card is in English and your nationality is mentioned and it is issued by the government of like India or government of your country, then it is okay. Any document which can prove your citizenship is okay, but it is always better to send that document which is mentioned or what they ask, like birth certificate or family registration certificate or your national ID card is okay also. So if it your nationality is written, you can send them. So UST is National Research Institutes based graduate university. Only graduate degree programs are offered at this university. No undergraduate degree is offered in this university, and there are some institutes like campuses in this university which are directly connected to the centralized system of University of Science and Technology.
University UST students, graduate students plus researchers who are working as researcher, but they are not a degree student. UST professors, there are some researchers or senior researchers in like they already have some PhD and they are working as research, and then professors, direct professors. Facts and figures. So there are some facts and figures. The most important is that National Research Institute's campus is 32. So total number of campuses for this university are 32, and some international students are already there, which are from 56 different countries, and major in the fields of natural sciences, IT, and biotechnology, natural nanotechnology, and other science and technology, engineering technology. 46 majors are offered at this university. Domestic partner universities for credit exchange. Sometimes some students go to other university nearby and they attend the classes for the credit hours as well. And 50 students from 56 countries are already at UST. तो 56 कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, 56 कंट्रीज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं. फैकल्टी मेंबर्स टोटल हैं जी 1158, 1158. And students, international students are 457 international students, and the graduates already who completed the degree are 707 international graduates, and 840 PhDs, and 23 total number of graduates. This is the distribution of the students. PhD integrated degree mean the masters and PhD is combined. 2 years for master and then 3 years for the PhD. So at the end you will get the degree of the masters. Sorry, PhD. For this integrated program, you can directly apply after your bachelor's degree. So for PhD, you need the master's degree. Already, you have already completed the master degree, then you can apply for the PhD. आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, 18 ईयर एजुकेशन ऑलरेडी है तो. लेकिन MS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 ईयर एजुकेशन पे जो बैचलर्स है. और अगर आप चाहते हैं कि आप 5-6 साल लगा के डायरेक्ट PhD कर लें, मास्टर्स और PhD कंबाइंड, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करें. उसके लिए आपका जो है वो आपको बैचलर 16 ईयर एजुकेशन चाहिए. अब स्कॉलरशिप की डिटेल्स देख लीजिए. इसमें स्कॉलरशिप आपको मिलता है जी. स्कॉलरशिप आपको मिलेगा एज अ PhD स्टूडेंट 1.6 मिलियन कोरियन वॉन, विच इज almost equal to $1,350. It is written here at the current rate, or maybe near about 1,400 US dollar. And for the masters, you will get 1.2 million Korean won every month. This is a monthly stipend. Along with this, you will get tuition support per semester. So it is equivalent to $2,100 full tuition fees. Okay. For the masters, you will get $1,000 or more than this per month. Every month you will get this amount in your account. And for the PhD, you will get 1.6 million Korean wons, or 1,350 US dollar almost. And there are some other sports for research support, overseas training program. If your professor recommend you to go to any other country for the 90 days to do or conduct the research in any other institute, or your university or your professor has some collaborations with other universities, then he can send you to any other country for the research as well. So it all depends on you and your professor and your understanding. If he wants to send you and you agreed to go there, you can accept it, or you can apply for this offer. And then you can get the some international presentation or conferences support. आपको conference के लिए support किया जाता है, और बाकी आपको कुछ student led research projects अगर कोई आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए दिया जाता है. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप है वो ये है, जो डिटेल्स हैं, और इसके अलावा आपको वो एयर फेयर और वो चीज़ें भी दी जाएंगी. Then moving toward the name of these campuses and their cities. In Incheon, there is one campus. In Seoul, there are two campuses. In Gyeonggi-do province, there are three campuses. In Ansan city and nearby, and in the another province, there is one campus, and then 22 campuses in Daejeon city, which is just
2 hours at the 2 hours drive from the center, Seoul, capital of Korea. So there are 22 campuses in this one city, which is Daejeon, and this is another emerging city in South Korea. Then there are some other campuses. So name of the cities and the provinces is mentioned here. So in Incheon, Korea Polar Research Institute, Korea Institute of Science and Technology. Then these are the just names of the uh, campuses, so it is not important. So I'm going to skip these details. So admission types is you will apply as a foreign national whose parents are foreign nationals, and then this was the timeline for the previous year, but the latest timeline for the admission is given here. Admission will start on 18th of March, and you can submit your application until 8th of April at 5 p.m. Korean time. So you cannot submit after this time. Sorry, this is global Korea file, but okay, now I'm going to the application method. You will go to yes, Miss Biology. I think MS is for Miss or for Masters. MS is for Masters or Miss, I don't know. But the website for the application is apply.ust.ac.kr. Okay, you can directly go to this link and you can apply. This is the admission system. Create an account in the system. You will create your account by using your birth date and email address, and you can create your account by email and birth date. Then you will fill out the survey and personal medical assessment, which is just a simple type of form given yes and no answers are required there, and then application form completion. Select only one campus or school major and degree program. So you can apply to only one campus major and degree program at the in the one application form, and enter all information according to online guidelines and save them when they have been properly entered. So these required information we will discuss in the coming time or in the coming uh, minutes. If your family working at UST professor or stuff, so this is not almost related to you, skip it. Uh, then document submission. After completing this online form, you are required to upload your document submission in support of application. So we will discuss the required documents after this, and directly upload documents to the admission system. Only JPEG or JPG or PDF or HWP file or MS files are accepted. So remember this. It is always better to upload PDF files because it is easy to read and easy to open. Everyone can open this. And documents must be less than 5 MB. So one file should be less than 5 MB. Upload all documents according to online guidelines and save them when they have been properly uploaded. So there will be some other guidelines in the admission system, and you are required to upload your documents in the PDF or JPG or MS Word file. Application fee payment, then you are required to submit your application fees. आपको फिर application fees भी जमा करानी है, which is just $30. And if you or your friend can submit this from Korea by just direct transfer or by credit card or something, then they have to pay 35,000 Korean won. So there are two systems, which KGINICS and PayPal. You can also use this one. You must use a credit card issued outside of Korea. For first type of this fees payment, you or your friend must be in South Korea and he can use credit card issued in Korea. So after this, complete the application form. After submitting your application fees, you can submit your application form. Before that, you can save, and next day you can start again uh, for the next step or something. Or if you can just one day you want to fill the application form and next day you want to upload the documents and third day you want to pay the application fees, it is also okay. So this is required.
So these are some things you need to make sure that the admission application has been completed, all relevant documents have been submitted, application fees have been paid, and other if required. Then eligibility criteria for the doctoral program is applicants with a master's degree or who are expected to receive one by February 2021. So this is for last semester's guidelines. So it will be August 2021 for the coming semester. So do not consider this one, but consider it for August 2021. So if you are expected to graduate in August 2021, then you can apply. Those acknowledged as having qualifications equivalent to or greater than those required to obtain a master's degree under the relevant laws and regulations. So this is not required or not related to you if you have master's degree. And for the integrated or master's program, if you are applying for the master's plus PhD program or for the master's program only, then applicants with a bachelor's degree or who are expected to receive one by August 2021, not the February, because we are already uh, into the we are applying for the admission in fall semester 2021. So it will be August 2021. And online application process, how you will apply: creating account and giving personal information, fill out the basic survey, and step one is enter basic application information like your correct name and desired major and campus, degree program, your historical information or something, or your nationality and other things are required, your passport number or maybe ID card number, such as university or graduate school from which you have received your degree, educational transcript, standardized English test score, and a picture. So these are some requirements, but we will explain or discuss these required documents in details next. Personal medical check is just a simple type of form. Yes and no is required. They write a statement of proposal for study. So study plan is required for these applications. And upload required documents. Then uploading your required documents and confirm application information, pay the application fees, and complete the application. Like if you are just new to the application process or you are applying for the first time, you can read this page, which is a page number 9 here. And this is a very simple given information about the online application process, what is required in very simple words. तो ये जी इंफॉर्मेशन जो गिवन है ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है उन हजरात के लिए जो बिल्कुल नए हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते, पहले कभी अप्लाई नहीं किया और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वो उनके लिए है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सो this circle mean that it is mandatory, it means required, and without this you cannot apply. This triangle mean optional, and dash mean not applicable or not required. Proposal for study, which is a form number 4, uh, same as in Global Korea Scholarship Program, there are some forms given at the end. Not the exactly same, but like they will provide you some forms, and in those forms or within that area you will write your proposal and everything, and then you can submit and upload. So it is required for all degree programs, doctoral, masters, or masters leading to PhD combined degree. Directly upload to online application or admission system. Bachelor's degree or certificate of expected graduation. So if you are expected to graduate in August 2021, then you can also apply, but you can upload this certificate of expected graduation. It is required for both masters leading to PhD and PhD program. So transcript of bachelor's program, it is required. Uh, Transcripts show grades as a percentage. Transcripts are permitted not to contain grades as a percentage if the issuing university does not issue such transcript. Transfer students should submit transcript from all schools that they have attended. So this is not a case in the most of the times. You can directly submit your transcript for the bachelor's, and for the you need the master's degree for the PhD program, and similarly master's transcript for the PhD program.
Master's degree thesis is required for the PhD program, so submit only the title and abstract. Title of your thesis and abstract of your thesis in form number 1. List of required documents is continued, and official English test score is required for this scholarship. You need the Ielts or TOEFL. So I will let you know how much IELTS score is required or what band is required for the English uh, test score. It is required for all degree programs. Specific details about score criteria, terms of validity, admission, exemptions, conditions, and other things. So it is required to submit the original score report. You may be requested to submit an original score report. So if they ask you for the original, then only you can send. Otherwise, you need to upload your scanned copy. Certification of previous employment. If you were employee of any uh, organization, then you can submit. Otherwise, it is not required. So other documents proving your excellence. So if you have any other documents, for example, research papers, patents, this is also related to research, and awards, certificates, education courses like online courses or something. You have some certificate for this, then you can submit these additional these documents as well. So this was the uh, required list of documents in very short form. Mandatory documents for each admission type. Foreigners are required recommendation letters, at least one and maximum of three. So most of the time, I suggest students to at least submit two recommendation letters. The process is very simple. There are two types of systems to submit this recommendation letter. Recommendation letter इन्होंने कहा हुआ कि at least आपने one submit कराना है और maximum you can submit three. लेकिन मेरी सजेशन ये है कि दो लाजमी जमा कराएं, दो प्रोफेसर से ये रिकमेंडेशन लेटर जरूर बनवाएं यूएसटी के लिए और सबमिट करवाएं. ठीक है कि एक अगर वीक हो तो हो सकता है आपका दूसरा जो रिकमेंडेशन लेटर हो वो मे बी ज्यादा अच्छा हो तो वो कंसिडर हो जाए. The recommendation form can be downloaded from the UST admission website. मैंने पहले बताया है कि कहाँ पे है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ठीक है. So choose one of the following submission method. Recommendation letter कैसे सबमिट करना है. ठीक है. अब वो ऊपर तो जर्नल थी जो सबके लिए रिक्वायर्ड थी. अब यहाँ पे है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने डिफरेंट तरीके से थोड़ा सबमिट करनी है. अब यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर कैसे सबमिट करना है, ये ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप से डिफरेंट तरीका है. ठीक है. इसके अंदर दो आपके पास ऑप्शन है. नंबर वन ऑप्शन आपके पास है, द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज यूएसटी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम. When completing the online application, enter recommenders information including their email address. Confirm whether your recommenders were properly able to submit their letters, as only those letters submitted before the deadline will be valid. ठीक है. Now I'm going to read these two types and then I will explain. Recommenders in second type और दूसरे जो आपके पास type और option available है, recommenders may submit their letters of recommendation directly via postal, mail or email. Letters submitted in this fashion must be accompanied by the UST letter of recommendation form, which can be downloaded from the UST admission website. And the address for the postal, like if your recommender want to send it by post, then this is the address. This is the zip code number, and then student affairs team, University of Science and Technology, Gojeong-ro, Yoseong-gu, Daejeon, Republic of Korea. ठीक है. Up next, only letter received by mail service that offer direct delivery tracking services will be accepted, like DHL or TCS or something. Uh, Only recommendation letters arrived by the deadline will be considered. So within deadline, you must submit these recommendation letters. Recommender eligibility. Academic advisor at the university from which you have graduated. Your direct supervisor at your current or former workplace. So if you have a master's degree, then definitely you did the thesis. आपने thesis किया होगा तो आपका कोई supervisor होगा. तो ये कहते हैं कि अगर आपने मास्टर्स वगैरह कर लिया तो आप डायरेक्ट अपने सुपरवाइजर से कहें.
अदरवाइज लाइक इसका ये भी मतलब है कि आपके जो टीचर हैं डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के दौरान, वो आपका रिकमेंडेशन लेटर, और दे कैन बी योर रिकमेंडर, दे कैन सबमिट रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टू टाइप्स. ये दो टाइप्स मैं अभी आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ. दो ऑप्शन देती है यूएसटी रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यूएसटी में ये रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करने की है कि आप ऑनलाइन ही सबमिट करें. ऑनलाइन कैसे सबमिट करेंगे? जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने ऑनलाइन सबमिट करना है या आप बाय मेल करना चाहते हैं, पोस्टल और ईमेल. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि ऑनलाइन आपने का रिकमेंडर जो है वो सबमिट करेगा, योर रिकमेंडर विल सबमिट दिस रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन on the admission website, then you should write his email address in that given form. आपने उस फॉर्म में जो आपके पास वहां आएगा उसमें आपने अपने प्रोफेसर या रिकमेंडर जिसे कहते हैं उसकी ईमेल एड्रेस और बाकी डिटेल्स देनी होंगी. ठीक है. उसका पोजीशन, व्हाट इज हिज पोजीशन, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रोफेसर और समथिंग, एंड हिज डिपार्टमेंट एंड एड्रेस. Then he will receive a link for the recommendation letter. देन उसके पास एक ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन दे के, व्हेन यू विल सबमिट दिस स्मॉल फॉर्म और इंफॉर्मेशन पेज, then he will receive an email, and he will get a link there in email. So he can directly click on that link. उसने उस लिंक पर क्लिक करना है आपके प्रोफेसर ने, तो एक वेबसाइट ओपन होगी जहां पे उसके पास ऑप्शंस होंगी रिकमेंडेशन लेटर फिल आउट करने की. आपने रिकमेंडेशन लेटर या उसने लिख के रखा होगा वर्ड में, वो कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट करना है एंड सबमिट करना है. अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो रिकमेंडेशन लेटर किस तरह का होता है. सिंपल सा होता है. अगर ये वाला सिलसिला अगर आप ऑनलाइन वाला करें तो वो ज्यादा बेहतर है. इन only if your recommender or professor is active and he is using email every day. सो अगर वो ईमेल हर रोज चेक करते हैं और सबमिट कर सकते हैं तो ये वाली ऑप्शन लें. अदरवाइज अगर आपके रिकमेंडर्स नखरा कर रहे हैं या वो टाइम लेते हैं और वो भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स का मतलब सपोर्टिव नहीं है ज्यादा, तो फिर आपको सेकंड वाली ऑप्शन करनी होगी. आप खुद से लेके जाएं उनके पास रिक्वेस्ट, उनसे कहें रिकमेंडेशन लेटर बना दें, प्रिंट आउट कर दें, साइन कर दें. देन यू कैन close it in envelope and ask him to sign on the back side and submit it by the post or send it by the post. सो सेकंड वाला ये होगा कि आप वहां पे सिलेक्ट करेंगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, यू विल सेलेक्ट दैट योर रिकमेंडर विल सबमिट रिकमेंडेशन लेटर बाय पोस्ट और ईमेल. So you should better try with the postal mail, like you can send by DHL or TCS or any registered courier service, and this is the given address for sending this recommendation letter. ठीक है. अब ये आपको आई होप के समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आ गई है तो जस्ट यस लिख दे नीचे, तो मुझे आसानी हो जाएगी. मैं नेक्स्ट चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको ये रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करने का तरीका समझ आ गया तो यस लिखते हैं. दो स्टूडेंट्स देख रहे हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. सो जस्ट राइट यस इफ यू गॉट द मीनिंग ऑफ दीज टू अवेलेबल ऑप्शंस फॉर द रिकमेंडेशन लेटर्स. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आप सो रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स. ओके, रमवास एंड श्रुति दास. ओके, दैट्स गुड. आपको समझ आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर की अक्सर औकात या एवरी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हाउ वी कैन सबमिट दिस रिकमेंडेशन लेटर एंड समथिंग. ये स्केड्यूल जो है ये पिछले सेमेस्टर का है, लास्ट सेमेस्टर का है. सो दिस सेमेस्टर फ्रॉम 8th of March to 18th of or something. What is the schedule here? 18th of March to 8th of April. 18th of March to 8th of April. You can submit your application. So key details. UST notifies applicants individually about which supplementary documents they must submit via email. Once you submit your application form, then if any other extra document is required by the university, they can send you email and they will ask you to submit this form by email to them.
So those who are required to submit application document must do within the given timeline. Then they will give you some deadline within 3 days or 7 days or something by email. You can submit them. This is the email address, and they will mention their email address, or simply you can reply to them with your required document. Keynotes. Applicants must correctly enter their email addresses because supplementary documents information will be delivered by email. So you must be very careful when you are writing your name and your citizenship and your email and date of birth. These things are very important in every application process. Applicants are responsible for the consequences of entering their email addresses incorrectly or not checking their email frequently enough. अगर आपने बीएस कर लिया है या बीएस स्टूडेंट हैं तो then you should have one email address and you must use it frequently, like check it maybe once in every day, or maybe after 1 days or 2 days. Application information and submitted documents cannot be revised over the supplementary document submission period. So these were the information. Now the major thing which you need for this scholarship, and without this score you cannot apply, is the IELTS or official English test score. Now TOEIC will be not considered, so cancel this one. TOEIC is not an option for the coming semester and for the coming admissions. So never attempt TOEIC for University of Science and Technology. I always suggest people to go for IELTS because every university uh, accepts this IELTS score. So you will give the IELTS academic, okay? IELTS academic, and you need 6 band for the IELTS academics. Without this 6 IELTS band, you cannot apply. Without this score, you cannot apply. Uh, TOEIC and other details are given here something. So this is the previous year's or previous semester's instruction. So the latest instructions, when they upload, I will give you this detail, small detail, which is different every semester. Applicants exempt from submitting official English test scores. These are the like countries: USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and South Africa. Those countries whose national language is English, they are not required to submit this English test score. So there are some other countries as well which are not required to submit the English certificate, and they can submit simply some certificate of English as medium of instruction. But India, Pakistan, and like Asian countries are not included in this list. Only Sri Lanka is there in this list. So if you are from Sri Lanka, you can submit certificate of English as medium of instruction, and this form is uh, available in UST website, and you can take print out and ask your head of department or institute to fill this for you, and you can submit directly it this form, and you are not required to submit the IELTS or TOEFL. So moving forward, English score authenticity. UST will confirm authenticity of the official English test score submitted by applicants through the administering institutes. Like your registration numbers and everything is given on your result card, so they will check it online. This is evaluation information by stages, so better, I think we should skip this one and move next. So this is also required after the admission is confirmed, or you are successful candidate, or you are selected for the scholarship. Then you need this information, which I can explain later. uh, Next is the UST student labor contract. There is a contract because you will be like an employee, and these things are for those who got the confirmation email for the scholarship. So there are 32 campuses. Name of each campus, majors offered at that campus, and degrees offered for foreigners is like PhD, integrated program, and masters. So at IBS, like basic sciences, at this campus, masters is not offered, only PhD and integrated PhD, mean masters plus PhD.
which is a 5 to 6 year program, you can apply. For only 2 year master, you cannot apply. And KIT, Korea Institute of Technology, you can apply for all degrees. And KIMS, Korea Institute of Material Science, you can apply for the PhD and integrated masters and PhD combined degree. So civil engineering, geotechnology like geology or geospace engineering, construction, environment engineering, civil engineering, they can apply for the PhD only. Next is KIST, which is Korea Institute of Science and Technology School. There are some divisions: Division of Nano and Information Technology, Division of Biomedical and Science and Technology, Division of Energy and Environment Technology. So if you are from physics or chemistry or chemical engineering, तो आपको परेशान नहीं होना. Do not worry about this because there are all research areas included in these divisions. So you need to check one by one. आपको हर एक डिवीजन को वन बाय वन चेक करना होगा. आपसे रिलेटेड अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या इस तरह की फील्ड से हैं तो आपके रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं. डायरेक्ट नेम वो नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर. डिवीजन्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो रिसर्च वर्क होता है या जो भी बाकी डिग्रीज होती हैं उसके तमाम सिलेबस, तमाम चीज़ें आपसे रिलेटेड होंगी. Like for physics peoples, mostly basic science, this is the institute where physics and related departments apply for the admissions in the PhD and integrated degrees. For the chemical, this is chemical, chemistry, material science. This campus is most likely the option, and there are some others like Korea Institute of Material Sciences. It is also related to chemistry and chemical engineering and metallurgical engineering or materials engineering. So nanomaterials and science engineering, HCI and robotics, biomedical engineering, neuroscience, and biological chemistry. So biology and chemistry is a combination of biological chemistry, energy engineering, and environment engineering. So within these all forms, somewhere you will see some professor is working on chemistry and materials science. Somewhere they are working on fuel cells and others, solar cells, and like the biological chemistry. So then it comes to the Korean Institute of Science and Technology Information, which is data and high performance computing science, like computer science related field is there. And Korea Institute of Machinery and Materials, Nanomechatronics, Plant System and Machinery. So this is related to mechanical engineering and machinery and materials. So there are 3 to 4 in degree programs offered here: environment and energy and mechanical engineering. So environmental sciences students can apply here, energy engineering can apply here, mechanical engineers, mechatronics engineers can apply, and system and machinery. So there are lots of options for this campus, and master's, PhD, and integrated program all are available for this. And Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology School. So if you are from biology or bioscience, you can see these details: biotechnology, bioscience. So these are the some names for the different small divisions within that one campus. Like these divisions are like small departments within one campus. Then it comes to Korea Basic Science Institute, where they offer bioanalytical science. It is related to biology, and some analytics or data analytics is involved. So PhD integrated program is available. KITEC is another industrial technology, industrial materials and smart manufacturing. If you are from mechanical engineering or like materials engineering and you are working on smart manufacturing or smart materials or manufacturing of materials and properties of materials, then you can apply here. And robotics is option here. Green processes like related to chemistry and environment. Energy system is energy engineering and fuel cell or solar cell and chemistry related department. Advanced energy and systems engineering is available at KAIR, which is Korean Institute of Energy Research. So here they mostly work on the energy related projects: solar cells, batteries, biofuels, and fuel cells, and renewable energy engineering. So there are some options for PhD and integrated programs. And then Korea Atomic Energy Research Institute is related to nuclear systems engineering. So all options are available for foreigners. uh, Radiology and medico-oncology sciences PhD and integrated program is available. Energy and power conversion engineering, electro-functionality materials engineering,
at Korea Electrotechnology Research Institute. So if you are from power engineering or electrical and power engineering, so you can apply here, and even functional materials engineering, you can apply to this campus. Then going to the electronics and telecommunication, if you are from computer science and telecom and electronics engineering, then you can apply to this campus. And astronomy and space, transportation systems engineering. Mostly students ask me about this because there are no options in so many universities. But at this university, you can apply for the PhD program if you are from transportation system engineering or rail research or related degree programs. And then to bioanalytics science, medical physics, nanoscience, science of measurements is for Korea Research Institute of Standards and Science. And conversion medicine and ocean science, applied ocean science, medicinal chemistry and pharmacology, so medicinal chemistry, pharmacology, advanced materials, chemical engineering. So there are lots of options for chemicals and medicine and pharmacy related students. So these were all three campuses, and I gave the brief introduction of these campuses. These are the forms given. We will fill these forms later, but at the moment, I think it is enough for today. The basic requirement for this scholarship is the IELTS score, that you must have IELTS band 6 in the English proficiency test. You can also submit TOEFL if you have internet-based or paper-based score. So this is the requirement for the TOEFL. But IELTS academic, you need 6 band in IELTS academic. So this is major requirement. Mostly student ask me about this, and it is given at the page number 14 in the instruction guidebook. So IELTS 6 band is required. If you do not have IELTS 6, then even you can book the date in the like mid of the March, and you can get your result at the end of March, and you can submit before the 8th of April. So you have some 15 to 20 days to appear in the IELTS and apply to this scholarship program. अगर आपका कोई क्वेश्चन है सिंपली इस गाइडलाइन से रिलेटेड जो मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं, देन यू कैन आस्क मी, and otherwise, and in next session what I will do, I will give you the some more information related to the campuses and how you can find the campus and professors detail. आपने कैसे कैंपस फाइंड आउट करना है, उसकी डिटेल वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, और आपको एक चीज मैं एंड पे बता दूं कि जब भी आप कोरिया में पीएचडी या मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं या इवन मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे यूएसटी के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर के पास से एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। लाइक आप ईमेल करेंगे और साथ सीवी अटैच करेंगे, और प्रोफेसर को ईमेल लिख के आप कहेंगे कि सर मैं यूएसटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरा एरिया है, मतलब चीज़ें आप जो ईमेल में लिखेंगे, वो लिखने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट में कि आप यूएसटी एप्लीकेशन या एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन दिस फील्ड, उसका जो भी फील्ड है या आपका जो भी फील्ड है। अगर आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है तो आपका जो है सिलसिला वो तकरीबन चल पड़ेगा, और आपके चांसेस तकरीबन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देते हैं तो आपके 90% चांस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह से कोटा नहीं है। रिकमेंडेशन जो है वो प्रोफेसर की ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे उसके बाद आपके पास नेम होना चाहिए जिस प्रोफेसर के से आपका राब्ता हुआ है और उसने आपको सुपरवाइज करने के लिए ओके कहा है। ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, या मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी के लिए। जो ओनली मास्टर्स के लिए हैं, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर जस्ट मास्टर्स डिग्री, they can apply without the acceptance or without the positive response from the professor। वो प्रोफेसर के पॉजिटिव रिस्पांस से के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेसर का रिस्पांस होगा तो आपके चांसेस मास्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक अगर इन केस विदाउट एक्सेप्टेंस और विदाउट द पॉजिटिव ईमेल और विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ योर प्रोफेसर, अगर आपके चांसेस 1 हैं, तो आपके पास अगर प्रोफेसर का रिप्लाई और एग्री है प्रोफेसर आपको सुपरवाइज करने के लिए, तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो
स्टार्ट करें अपने ईमेल सेंड करना। कल जब मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से मेजर कैसे फाइंड आउट करना है और प्रोफेसर की डिटेल कैसे मिलनी है आपको, या आपने कैंपस की डिटेल्स कैसे फाइंड आउट करनी है और वहाँ पे प्रोफेसर कौन सा प्रोफेसर किस एरिया में काम कर रहा है, मैं नेक्स्ट सेशन में कल सेम टाइम पे 7 PM पाकिस्तान टाइम एंड 7:30 PM Indian time. So I will do another online session because I do not want to go मोर टुडे। आज मैं ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट कर करके या सिंपल सिंपल वर्ड्स में बयान की है। तो बेहतर ये है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप दोबारा से रीड आउट करें और आपको जो कन्फ्यूजन्स हों आप क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पे और मैं आंसर करूँगा और साथ साथ मैं आपको कल मेजर सेलेक्ट करने की और प्रोफेसर सेलेक्ट करने की तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो कल मतलब 28 फरवरी होगा। तो 28 फरवरी को ये जब आप चीज़ें देख लेंगे तो आप 28 उनत sorry, Yakam March, 1st of March, you can start sending emails to your professors in your field. And then if you get a positive response, then you will have so many days to prepare for the documents and other things, because the applications will start from the 18th of the March and the deadline is 8th of the April. So you have almost 1 month and 8 days. You can even book your date for the Ielts in the mid of the March, and then you will get their results in 2 weeks, and then you can submit application in the early और फर्स्ट वीक ऑफ योर अप्रैल। तो आपको क्या करना है कि अगर आइल्स नहीं है तो मार्च के अंदर आप आइल्स कर लें। 15-20 के नियर अबाउट अगर आपका आइल्स हो जाता है तो आपको 2 वीक्स में एडमिशन रिजल्ट आ जाएगा और वो आप अपलोड कर सकते हैं। और उससे पहले आप प्रोफेसर्स को ईमेल लिखें। ईमेल लिखने का तरीका मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, 2 वीडियोस हैं शॉर्ट सी, वो आप देखें। और सीवी की जो है वीडियो वो थोड़ी सी लेंथी है 40 मिनट्स, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप तो आपकी सीवी विद इन 1 आवर और 2 आवर्स रेडी हो जाएगी फॉर मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। मेरी सबसे पहली वीडियो हुई सीवी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी सीवी हमेशा रॉन्ग होती है, सीवी के अंदर रॉन्ग आइडिया वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या सीवी के अंदर अपनी जो मेजर उनका स्किल होता है वो उसको हाईलाइट नहीं करते, या मेजर जो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए वो हाईलाइट नहीं कर रहे होते, या कोई भी चीज़ कैसे लिखनी है, किसी सेक्शन को किस तरह से अच्छी तरीके से लिखना है, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, इस तरह के टिप्स दिए हैं मैंने। वो अगर आप देख लेंगे तो आपकी सीवी 2 आवर्स में आई एम श्योर योर सीवी विल बी रेडी फॉर द मास्टर्स और पीएचडी applications. And we will meet tomorrow again in a live session. I will uh, discuss how you can find the majors in different campuses and how you can select a professor or how you can get the information related to professor and his research area, and then you can start sending emails to the professors in your field. Right, if you have any question, Ram Abbas, I think you are online, so you can write, or Shruti Das, if you are listening to me, you can also write your question related to this session or maybe related to Global Korea Scholarship, and then I will sign off. So I'm waiting for your questions, and if you do not have any questions, you can write see you tomorrow, or okay sir, don't have question, or within 2 minutes I will sign off from this live session. So I'm just waiting for your questions in this live session. And if you have any question related to Global Korea Scholarship Program, you can also write. Yes, you are online. That's good. I hope you are learning so many new things about the scholarships and application process. I'm not confident about sending email to professor as I have. You can send me for the review. I will give you the feedback about your emails. First watch those 2 videos. Okay, after watching those 2 videos you can send me email, write your email, and also attach your CV as well. So write the subject and proper email, send me the proper email which you want to send to a professor, then I will give you the feedback through the email. So I can share the email address here. So I think yesterday I shared
or give you the email address as well. So you have that email address. So send me the proper email with your CV. So take your time, maybe 1 or 2 days, and prepare your CV today or tomorrow, and then write an email and send it to me for the review. Then I will give you the feedback on your CV, and you can improve your CV and also email. So I will give you the feedback. After the corrections or suggestions, you can start sending emails to the professors. So it is not a problem. Tried it before but got no response. Yes, it is common in Korea. Professors most the response rate is really low. Mostly professors reply if they are interested to hire a student. अगर आज जो तो अगर प्रोफेसर जो है वो श्योर हैं कि वो सुपरवाइज करेंगे. Yes, see you tomorrow. Okay. So you can send me email, and then I will check your email. And can I send my email? Yes. You can also send me Ammar or Amar Gaire. You can send me your email and your CV for the review for masters and PhD applications. So write the proper email. And yes, if you are from Nepal, you are welcome, and thank you so much for joining me. And if you want to apply for the University of Science and Technology graduate degree like master's or PhD scholarship program, you can join me every day at 7 p.m. Pakistan time. Or you can you want your CV, or you want some feedback on your CV or email, then you can send me on this email address, and I will send you the reply within 2 days or 1 day. And then, or if you want to apply for the Korean government scholarship program or Global Korea scholarship program, which is announced already, so you can watch my previous live sessions and 4 to 5 videos. And there is one small video for 5 minutes that will give you the summary of the required documents, and also the application process and further details how you can apply. You are welcome, and you can join me every day. Like I'm doing live sessions for these scholarships up for the coming semester admissions. So you can write your questions every time, and you can even send me documents for the review. I will give you the proper feedback uh, in the earliest possible time. So it is up to you if you need any help or information related to scholarships in Korea for masters, PhD. Even for the bachelors, I can provide the information related to science and engineering scholarships most of the time. And also for the other fields, Global Korea Scholarship, which is announced already, and I did some live sessions. You can watch those videos. Okay, thank you, Iram Abbas, and hope to see you tomorrow again at the same time. And hope you are learning something from these live sessions. So if you do not have any question, I'm going to sign off and see you tomorrow for the more information related to this scholarship, which is University of Science and Technology Korea, or UST Korea Graduate Degree Scholarship Program. And I will give you the details about the professors, how you can select major, and how you can select the campus, or how you can find out the details of each professor in any campus. So I'm signing off. Thank you so much for joining me, and see you tomorrow. Bye bye.